Students, welcome to the video lecture series for the subject Currency, Banking and Exchange. Student, today I'll be talking about Indian money market. Now, first of all, what is money market? So, money market is a market where we actually trade short-term loans, where we actually we are actually involved into trading of short-term loans between the banks and the financial institutions. तो पहली चीज़ याद रखनी है कि whenever I'm talking about the money market, this means I'm dealing with the short-term requirement of the market. Now in this market only, the participants in the money market, they borrow and they lend only for the short period of time. तो short term instruments in the money market में हम intercall money market भी इसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे treasury bills, certificate of deposits, commercial papers and repurchase agreements, and there are very n number of options which actually are prevalent in the market. So like if I talk about the money market now, RBI is the apex institution which actually monitor the functioning of the money market. Now this is like when it is involved into its functioning, this money market actually plays a very important role. Now, first important function which this market provide, it is that through this money market, the surplus funds move to the deficit areas. Now इसका सीधा सेंस यही है कि भाई market where there is excess, that money is actually invested into that segment जहाँ पर deficiency है. तो this helps in tracking the temporary liquidity crisis in the country. तो अगर कोई भी liquidity crisis हो सकता है short term में, उस crisis को meet out करने का काम कौन कर रहा है? हमारी money market कर रही है. Now if the money market is not in synchronization with RBI, the central bank will not be able to achieve its desired goals. So as we have already discussed in the live classes, that RBI is the apex institution which actually monitor the functioning of the entire market. तो ये काम क्यों करना है? बिकॉज उसको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो आपका वो फ्लक्चुएशंस है इकोनॉमी में, उसको कंट्रोल करना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आना है. तो ये गोल आरबीआई अपने इन्हीं मनी मार्केट के थ्रू पूरा करती है. Okay, now government deficits are financed through the money market in non-inflationary ways. So we have already talked कि what all are the ways जो हमने अपनी classes में पढ़ रखा है. Now students, in your screen there is there is a structure of Indian money market. तो ये structure आपको अपने अगर question के इस point से आपको याद होना चाहिए कि money market को हम दो sectors में divide कर रहे हैं. One is ऑर्गेनाइज्ड एंड सेकेंड इज अनऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज सीधा सा यानी ये वो सेगमेंट है जो कि आपकी आरबीआई के कंट्रोल में है और आरबीआई को फॉलो कर रहा है. व्हाट ऑल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय द आरबीआई, दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज फॉलोइंग ऑल दोज लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस. बट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो अपने मन तरीके से काम कर रहा है, विच हैज नो which actually where RBI plays no major role and they are not bound to follow any of the guidelines which are actually issued by the RBI. So like when I'm talking about the organized sectors में साफ साफ क्लियर है. ऑर्गेनाइज मीन्स अंडर द आरबीआई. तो अब इसमें सीधी सी बात है कि अंडर द आरबीआई तो मतलब एक इंस्टीट्यूशन इसमें आ गया कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस से काम कर रहा है, तो वो तो आपका हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट कमर्शियल बैंक्स, non-banking financial institutions, then post office saving banks, cooperative like banks, and ये सारे institutions they are again further divided. Now when I'm talking about the commercial banks, they are further divided into scheduled commercial banks and non-scheduled. We have already discussed जो schedule act को follow कर रहे हैं, they are part of scheduled banks, they are termed as schedules. एंड जो नहीं फॉलो करते हैं वो नॉन स्केड्यूल बैंक्स होते हैं. इसके अलावा आपके नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, तो नॉन बैंकिंग कंपनीज में दे कैन बी फाइनेंशियल कंपनीज, दे कैन बी नॉन फाइनेंशियल, मीन्स दे आर इन्वॉल्व इन टू अदर एक्टिविटीज अदर दैन प्रोवाइडिंग फाइनेंस. Okay, now from the same you get a last segment you are getting a cooperative bank. Now cooperative bank भी हमारी कंट्री में आपके बहुत चैनल्स के थ्रू फॉलो किया जाता है. आपका जैसे हमने कोऑपरेटिव स्टेट लेवल पे, देन स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, देन आपका अर्बन कोऑपरेटिव एंड अगेन लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, LDBs जिनको हम कहते हैं. तो ये सब कोऑपरेटिव बैंक का पार्ट है. Now, when I was talking about the scheduled commercial banks can be public sector banks, they can be private sector, public sector, private sector, and then again आपका private sector जब word आता है तो इसी के further आपके हो जाते हैं, मतलब इसमें आप you can talk about foreign banks,
Even you have Indian banks and even regional rural banks. Regional rural banks, RRBs, we have already discussed about RRBs in our one of my video. And if I'm talking about public sector, तो public sector में दो segment है, State Bank along with it associates जिसको बोलते हैं State Bank Group, and दूसरा है nationalized banks जो कि nationalize किए गए over the time and gradually merge होकर के, ये भी हमने आपके साथ live class में discuss कर रखा है. तो these were the various banks जो हमारे organized sector का part है. और unorganized में नाम से clear है, दो segments आ गए. Indigenous banks, indigenous markets, यानी ये वो market है जो कि क्या है, अपने मन चाहे तरीके से काम कर रही है, अपने तरीके से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है. एंड इसी तरह आपके मनी लेंडर्स जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं किसी लोकल लेवल पे, जो किसी बैंक की तरह काम नहीं कर रहे हैं पर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अगर हम आपसे कहते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, तो सबसे पहला फीचर है, फर्स्ट इट इज द कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट. इंडियन मनी मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. आपने आप सामने देखा कि वेरियस टाइप्स मींस कवरिंग फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज टू कोऑपरेटिव बैंक्स टू एक्सपोर्ट बैंक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स to indigenous lenders and so on. So in this way they cater to the financial need of different sectors of the economy. दूसरा, इट हैज इंडिजिनियस मार्केट. तो मनी मार्केट इज ऑल अबाउट इंडिजिनियस कंपोनेंट्स लाइक इंडिजिनियस लेंडर्स एंड सो ऑन. Many non-banking financial institutions, companies have come up and which give funds to the general public. So NBFCs are outside the control and supervisions. They actually जो आपके इंडिजिनियस मार्केट है, तो दिस इज एब्सोल्युटली आउटसाइड द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ RBI. Okay, the third component of like आपकी money market, the third feature is rate of interest. तो Indian money market is characterized by diversity in interest rate. For example, जो government का rate होगा वो वेरी करेगा, जो commercial banks हैं वो वेरी करेंगे, या आपके जो money lenders हैं जो वो वेरी करेंगे. तो this diversity is because of the immobility of funds from one section of money lender to another. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट. तो इंडियन मनी मार्केट जैसे आपने अभी चार्ट में देखा कि यहाँ पर दो सेक्टर्स पैरेलली प्रेवलेंट है. वन विच इज अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ RBI एंड द सेकंड सेक्टर्स विच वर्क इंडिपेंडेंटली, विच हैज नो इन्फ्लुएंस, विच डजंट फॉलो द लाइक आपकी जो भी गाइडलाइंस है ऑफ RBI. सो इन दिस वे दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट एलिमेंट जो फ्लक्चुएट हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, बिकॉज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट. नाउ नेक्स्ट इज अंडर डेवलप्ड बिल मार्केट. जो अगला फीचर हमारी मनी मार्केट का है वो है अंडर डेवलप्ड बिल मार्केट का. इंडियन मनी मार्केट में जो बिल मार्केट है वो अंडर डेवलप्ड है, इसीलिए यहाँ पर नो एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंट हाउसेज हैं. अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा, इन सब के बारे में पढ़ा है, बट इसका इतना ज़्यादा आप कह सकते हो एक्टिव फंक्शनिंग हमारी इकोनॉमी में नहीं मिलेगी. नाउ नेक्स्ट इज फॉरेन मनी मार्केट्स. तो ऑब्वियसली वी हैव टॉक्ड अबाउट कि लाइक इन जो हमारे पैसा है मनी मार्केट का, दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू दिस मनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू मूवमेंट between the Indian money market through from Indian money market to foreign market. तो जिसके लिए बहुत सारे institutions हैं जो intermediaries हैं जो इस ground पर operate कर रहे हैं. Okay students? Okay. So students, with this I can conclude that the money market is a subsection of the financial market. Entire financial market का एक part है जो कि short term financial funds और financial assets के through को deal कर रहा है. Now these instruments they actually have a maturity period which is less than 1 year and which is again highly liquid. आप आसानी से इनको convert करते हो. So whatever buying and selling of instruments which is done in the money market वो basically short term funds की जाती है. Now again as the name says, this market is not a physical location. Now most of the trading happens over the phones, now over the internet, and इवन वर्चुअल डीलिंग की जा रही है. वर्चुअल मार्केट है जहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं लो रिस्क, हाईली लिक्विड एंड अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि हम अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स जो है उसको मीट आउट कर सके. नाउ अगर आपसे कहा जाए तो बेसिकली यू शुड क्लियर कि व्हाट आर द मेजर प्लेयर्स. तो दैट इज RBI, अगैन ऑल टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, अगैन ऑल टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, and then mutual funds, non-banking financial companies, scheduled, unscheduled banks,
एंड इवन द वेरियस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स जो स्कीम्स होती हैं, इसके साथ साथ इवन एट टाइम्स यू विल फाइंड दैट कोऑपरेटिव बैंक्स इज वन ऑफ द मेजर सेगमेंट जो हमारे लिए जो ऑपरेट कर रहा है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मनी मार्केट. तो स्टूडेंट्स, these were the topic which I had to discuss today, and with my next video I'll be talking about these individual segments of organized and unorganized markets in detail. However, I've already covered major like topics in subtopics of my in various subtopics which we have already discussed in our video classes. Okay, so students, just learn this chart so that you are clear what the topic is all about, and gradually we'll take up individually various components of Indian money market. Okay students, thank you for watching.